Hey guys, welcome to this video and welcome to SMC International. Today we're back with a build, 3.4 lakh ka build hai. This is based on the i9 and RTX 4080. Let's get started with all the specs, but इससे पहले हम roll करेंगे आपके लिए एक montage. This is a really aesthetic black themed RGB PC build and the montage is right here. I'm living my nightmare. It is a monster. It's in my head. I'm living my nightmare. It's in my head. I'm out of air. Kinda wild, kinda strong, kinda back. Kinda wild, kinda strong. He breaks me like Okay, so coming over to the CPU, we have used the Intel i9-13900K, which is the flagship 24-core 32-thread CPU from Intel. i9 is the best single-threaded CPU. It has 24 cores, उसमें से 8 performance cores हैं and 16 cores are efficiency cores. Turbo frequency is up to 5.8 GHz. This is compatible with the Z790 motherboard series, जो कि हमने use किया है. So we've used the Z790 Carbon Wi-Fi. So this is an all blacked out motherboard. The MSI logo is lit on this motherboard. It comes with a 19+1+1 फेस पावर डिजाइन. टोमाहॉक से थोड़ा ऊपर ही है. टोमाहॉक के डिजाइनर पावर फेस से एंड comes with Bluetooth 5.3 and Wi-Fi 6E, so you're covered on the Bluetooth and Wi-Fi standards. Also this comes with PCI Gen 5 SSD. तो अगर तुम्हें PCI Gen 5 फ्यूचर में अपग्रेड करनी है SSDs तो वो भी लगा सकते हो. Gen 4 के ही GPUs है मोस्टली अभी एंड मेन स्ट्रीम में Gen 4 ही SSDs यूज हो रही हैं, बट दिस इज फ्यूचर कंपैटिबल अगर तुम्हें अपग्रेड करना है. अगर सपोज 5090 कम्स आउट विद PCI Gen 5 का बैंडविड्थ यूज कर पा रहा है वो और PCI Gen 5 SSD which are really expensive, but if you want to buy them, upgrade them, future में सस्ता हो जाएगा वो because it will come down like PCI 4. अभी PCI 4 has been priced really well in the recent times, तो PCI 5 भी हो जाएगा तो तुम अपग्रेड कर सकते हो. You don't need to buy a new motherboard. स्मार्ट बटन इंक्लूडेड है तो तुम मदरबोर्ड से पावर ऑन पावर ऑफ कर सकते हो. You don't need to use a screwdriver and 2.5 gigabit का LAN port है, that is a single LAN port. Okay, so the graphic card we have used is the RTX 4080. Comes with a 16 GB of GDDR6X memory and this GPU is the Gaming X Trio. Gaming X Trio MSI की flagship series होती थी, but जब से Supreme series आई है ये like it's kind of the mid-tier GPU. This comes with a very thick heatsink and performance में कोई compromise नहीं मिलने वाला है. Also GDDR6X memory is clocked at 21 Gbps and जो bandwidth बस है इसकी that is 256 GB. So this GPU is 20 to 25% slower as compared to the 4090. Previous series के comparison में 3090 Ti से भी ये ज़्यादा ही perform करता है. Even though it has the slower bus, but the clocks on the 40 series are high right now. तो 2.5 GHz तक ये reach करता है. 30 series में क्या था कि 2.1 GHz तक even if you maximum overclock it तो भी 2.1 GHz maximum जाता था, but 2.5 GHz में you get single core like परफॉर्मेंस बूस्ट मिलता है. बेसिकली 400 मेगाहर्ट्ज का डिफरेंस है एंड आई हैव बिन यूजिंग द MSI RTX 3080 Trio. दैट हैज बिन रियली गुड एंड इसमें साइड में RGB मिलती है तुम्हें. सो दिस इज अ RGB कार्ड, नॉट वेंटस की तरह. वेंटस इज काइंड ऑफ द बजटेड रेंज. उसमें वेंटस में तुम्हें परफॉर्मेंस अच्छी मिलती है बट यू गेट नो RGB. सो अगर तुम्हें सेल्फ PC के साथ जाना है तो तुम वेंटस चूज़ कर सकते हो. अगर तुम्हें लाइक मिड रेंज थोड़ा ग्राफिक कार्ड में एस्थेटिकली अच्छा चाहिए तो यू कैन चूज़ द X Trio सीरीज़. और अगर तुम्हें फ्लैगशिप लेवल लाइक Asus ROG लेवल परफॉर्मेंस चाहिए तो MSI में आता है सुप्रीम X चूज़ कर सकते हो. परफॉर्मेंस AAA टाइटअप है, तुम 4K में कुछ भी खेल सकते हो. अगर तुम्हें हाई रिफ्रेश रेट गेमिंग करनी है लाइक 1440p पे 360 Hz और 1080p 360 Hz तो वो भी तुम कर सकते हो आराम से. देयर वुड बी नो बॉटलनेक इन दिस PC बिल्ड. बाकी हम बेंचमार्क्स डाल देंगे. द बेंचमार्क सेक्शन विल बी अलाइव नाउ.
So those were all the benchmarks in this video. As you can see, this PC performs really good and this PC is suited for 4K 1440p में तो तुम literally कुछ भी कर लो ultra preset पे. This will give you more than 100 frames in every game, but 4K पे this card is basically made for 4K and i9 is also made for 4K. So this is a 4K PC. Okay, so coming over to the power supply, हमने use करी है Corsair की RM1000e, which is a ATX 3.2 standard जिसमें नया 12 पिन प्लग आता है एंड PCI 5.0 को सपोर्ट करता है. So this is good enough for 4080 wattage. 4080 कितनी like 450 watts maximum overclock ले लेगा and 300 around watt would be for the i9. So total power draw is like 750 watt maximum ले लेगा, 50 watt would be for the system. So even at full capacity load, the system would be consuming like 800 watts maximum at peak. Talking about the peak, like few seconds के लिए जो wattage आती है. So this power supply comes with 10-year warranty and 10-year warranty है. I am also using the RM1000X variant. मेरे लिए it has been really good. I was using it with the 3080 Ti and the performance and efficiency इस power supply की बहुत सही है. Japanese capacitors आते हैं and comes from brand like Corsair. तो Corsair is well known. They use good components and reliability है इनकी power supplies में. Fan is silent. अगर तुम्हें silent fan चाहिए, जब तुम्हारी PC लोड नहीं ले रही होती, fan spin ही नहीं कर रहा, results in a very like silent PC. अगर तुम full load पे भी हो तो इसका fan ज़्यादा आवाज़ नहीं करता है. We have tested it out multiple times and this fan is pretty much silent. ज़्यादा high RPM पे चलता नहीं है. This power supply has no overheating or whatever issues. The component used are really good. Coming over to the fans used, these are the Lianli Uni fan, which is the SL120 version 2. तो version 2 में update क्या है कि the RGB illumination and there is also improvement in the airflow. Lianli fans तुम्हें Uni fans पता ही है कि you can connect them, 3 fans एक साथ connect कर सकते हो with a single wire. So इसकी वजह से communication, RGB और airflow, पूरा PC build का जो look है वो बड़ा clean हो जाता है. Basically these fans come with a daisy chain design ताकि तुम्हें वायर्स ना लगानी पड़े. तुम्हें केबल मैनेजमेंट में बहुत ईजी हो जाता है इफ़ यू बाय दीज फैंस. वरना इंडिविजुअल केबल्स, एक तो ARGB केबल होती है और एक फ़ैन कनेक्टर की केबल होती है. बेसिकली 6 केबल्स यू हैव टू यूज़ फॉर 3 फैंस और इसमें विद अ सिंगल केबल यू कैन डू ऑल दैट. सो दिस इज़ that and RGB illumination इसका बहुत सही है. You can configure it with the Lianli software. इसके साथ also SLV2 controller आता है. So total हमने 9 fans use किए. Okay, so the SSD we have used is the 980 Pro. This is a really reliable SSD from Samsung. Comes with a 5-year warranty. इसमें TLC है. QLC में क्या होता है, reliability थोड़ी कम हो जाती है. Samsung जैसे ब्रांड के साथ आती है, इनका खुद का NVMe controller होता है and इनकी NAND chips खुद की होती है. तो basically the SSD is manufactured खुद से, like सारे components SSD के in-house है. So that's why it makes it very reliable as compared to some brands जो कि outsource करते हैं. So this SSD comes with 7000 read and 5000 write speeds. This is a Gen 4 SSD. So Gen 4 के हिसाब से this is really good. 990 Pro में तुम्हें ऐसी कुछ extreme या नए standards या नई speeds नहीं मिलती हैं. Also 990 Pro में कुछ issues आ रहे थे recently of crashing and stuff in the 2TB variant. So 980 Pro is pretty good for a high-end build even. PCI Gen 4 is fast enough for boot timings. Windows 11 की boot timings हो या games की हो, this is pretty fast. Coming over to the RAM, हमने use करी है 64GB RAM, which is the dominator platinum RGB. As you can see, हमने चारों slots full करे, which is DDR5 5600 MHz है. 16GB की single kit है and 2 kit यूज़ करिए. So 16GB into 4 हो गया है 64GB and clocked at 5600 MHz. डोमिनेटर का जो बहुत प्यारा लुक आता है, जो 4 RAM 6 जब तुम चारों slots full कर देता है. As you can see, we'll put a B-roll. This is really looking sick and you can customize it IQ के सॉफ्टवेयर में. Also IQ में तुम RGB individually RGB LEDs component कंट्रोल कर सकते हो हर RAM की. तो अगर तुम्हें चाहिए कोई पैटर्न बनाना, तुम कस्टम पैटर्न बना सकते हो. Now coming over to the case, हमने यूज़ किया है NZXT का केस instead of Lianli. So our customer wanted कि हम NZXT का H9 Flow यूज़ करें. So this case comes with 4 fans which are non-RGB. तो हमने उन सारे fans को निकाल दिया है. Case comes with side and front panel. Basically dual chamber case है, like a very premium look. Power supply पीछे तुम्हारी माउंट हो जाती है. This is kind of a Lianli O11 जो look start किया था, like a Flow series में पीछे ऊपर की तरफ भी तुम्हें totally mesh panel मिलता है. तो the performance is gonna be a little better as compared to जिसमें top में glass होता है cases में. And this is the look as you can see. तुम इसमें बड़े से बड़ा ग्राफिक कार्ड, मदरबोर्ड, ATX मदरबोर्ड भी सपोर्ट करता है. इसमें हमने 9 फैंस माउंट किया और एक एक्स्ट्रा फैन 4080 माउंट किया, विच इज अ 3 स्लॉट कार्ड. ऊपर से हमने लगाया 360 mm का रेडिएटर. देन टू दिस केस इज वेरी स्पेशियस एंड केबल मैनेजमेंट में कोई इशू नहीं आता है. देयर इज दिस NZXT की जो
केबल मैनेजमेंट का ब्लॉक है जो आगे है, थोड़ी केबल्स जो साइड से तुम्हारी जा रही होंगी लाइक द मदरबोर्ड 24 पिन केबल या जो SATA SSDs की केबल है वो थोड़ी हिडन लुक एस्थेटिक लुक आता है क्योंकि वो थोड़ी हिडन हो जाती है इस ट्रे से। दैट इज इट फॉर दिस केस। कमिंग ओवर टू द कूलर, हमने यूज़ किया है NZXT का Kraken Elite 360 विच इज़ LCD कूलर। एज यू कैन सी इसमें तुम GIFs डिस्प्ले कर सकते हो अप टू 60 फ्रेम्स और यू कैन डिस्प्ले CPU टेम्परेचर, GPU टेम्परेचर और कुछ पर्टिकुलर इमेज लगानी हो, छोटा सा वीडियो कन्वर्ट करके GIF में तुम वो भी कर सकते हो। सो इट इज़ वेरी कस्टमाइजेबल एंड इसकी LCD डिस्प्ले काफ़ी बड़ी है एज़ कम्पेयर टू द नॉन एलीट वर्जन जो NZXT का आता है एंड द परफॉर्मेंस इज़ रियली ग्रेट। i9-13900K को भी हैंडल कर लेगा। आइडल्स पे टेम्परेचर्स आर 38 एंड स्ट्रेस टेस्ट में भी 75 to 80 जाता है टेम्परेचर। इट इज़ अ 24 कोर GPU, फिर भी तुम 80 डिग्रीज के अराउंड स्ट्रेस टेस्ट में एक्सपेक्ट कर रहे हो GPU को, तो द cooler performance is really good. NZXT की series में this is the highest end cooler you get. This is the black variant of the cooler. Also we've used this NZXT internal USB hub क्योंकि इसमें USB like internal hub इतने motherboards में नहीं होते हैं। कंट्रोलर जो लियानली का हमने चूज़ किया है जिसमें 9 फैंस है उसके लिए एक हब चाहिए। Now you need hub for the display जो कि LCD डिस्प्ले है एंड ऑल्सो एक पीछे हमने फ़ैन लगाया जो कि NZXT का फ़ैन है। सो यू नीड मल्टीपल इंटरनल USB पोर्ट्स, तो उसके लिए हमने USB 3 इंटरनल हब यूज़ किया NZXT का। दैट इज़ अ वेरी एसेंशियल एसेसरी, वरना तो तुम्हें फ्रंट USB पोर्ट्स जो होते हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं। इसमें अब तुम्हें फ्रंट USB-C भी मिल रहा है और तुम्हें इंटरनल USB पोर्ट्स भी मिल रहे हैं सारे के सारे। दैट वाज इट फॉर द PC build. This was 3.4 lakhs and NZXT Lianli themed, kind of a mixed themed PC. This is for 4K gaming. Okay, so thank you to Vishnu Chandra Enterprise for buying this PC from us. If you want to get high-end gaming PCs like this, या तुम्हें AI के लिए PC चाहिए, ML के लिए और 3D VFX, we do all that. अगर तुम्हें customized PC चाहिए on Intel or AMD platform, you can contact us on our sales team. Number will be displayed on the screen right now. या तो तुम smcinternational.in पे visit कर सकते हो. So we can even ship it to you all India and with official warranty and services provided. और अगर तुम्हें हमारे स्टोर में विजिट करना है तो it is our Nehru Place. We'll add the address in the description. You can come and see your PC build live. Thanks for watching this video, guys. That was it for this PC. We'll be coming over with more such content like this, and that was it for the video.